So we'll just give it a couple of seconds so that people can join in. But this is really a really amazing conversation, Kainat, and thank you for holding such a sensitive space for it. It's very important. It is, it is. Indeed, it is very important, and plus, obviously, a very touchy topic, and definitely people do require a lot of safe place. They require empathy. They require you to listen. At least the least that we could do, जो हम definitely बात करें तो उस पर बिल्कुल बात करेंगे, मगर यही एक एक ये चीज है जो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज यू एटलीस्ट लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग और फीलिंग एंड एक्नॉलेज एंड डू नॉट रिजेक्ट देयर फीलिंग्स. दैट इज द बेसिक thing that we could do to help people around us, because we really, if we really care about people around us, if we really want to see them coming back to life, if they're struggling with something or the other, so we really need to help, because every person is surrounded by a few or like a more people जो कि किसी ना किसी तरीके से सिर्फ परेशान ही हो. जरूरी नहीं है कि वो किसी बहुत ज्यादा जो है ना वो, और शायद वो एक्सप्रेस भी ना कर सके. हमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ठीक है, वी शुड लिसन, और अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है एंड दे वांट स्पेस, so we should give them the space that they require. That is, I think that is the least that we could do. And obviously as Absolutely. general public हम ये कर सकते हैं, and definitely me as a professional, as a psychologist, I am, this is what we take oath of, this is what we're supposed to do, this is what, definitely after coming into this field we understand what is actually going on around us. Yeah. Assalamu alaikum, Imran. Thank you for joining us. And I think we have people joining in and out now. Kainat, हम बात कर रहे थे about किस जरिए से लोग reach out कर सकते हैं. सो साइकोलॉजिकल अगर जो है ना वो वही जो हम बात कर रहे थे कि टर्म जो है ना वो इस किस्म का मिल जाता है कि लोग खामोश हो जाते हैं, दे डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट. तो जब वो हमारे पास फर्स्ट सेशन में आते हैं, वी गिव देम द कॉन्फिडेंस दैट वी टेल देम दैट यू टेकन such a huge step for yourself, that you're seeking help and you're seeking a professional help, which is your right, and this is something जो है ना जो आप अपने लिए करने जा रहे हैं, and it is definitely gonna help you, change you, bring you towards betterment. आपकी ग्रोथ पे जो है ना वो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा. सो जब यही बात है कि जब वो आते हैं ना तो देर लाइक कि हमें बहुत there are a lot of clients, Ravi, you won't believe that they say कि nobody knows that we're taking therapy, we're coming into sessions. There are people who tell us कि नहीं पता किसी को भी, and they're doing it for themselves, and then after coming into like 5 or 6 sessions, they're like अब हम जो है ना we have this thing कि अब हम लोगों को हेल्प भी करना चाहते हैं और हम लोगों को बताना चाहते हैं that it's okay to, it is ओके वाली जो चीज है ना वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है, कि जरूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़ी उसको फेस कर रहे हो. इट्स ओके टू सीक हेल्प इवन इफ यू आर जस्ट फीलिंग लो, इवन इफ यू जस्ट फील हैविंग दिस थिंग कि आपको सिर्फ जो है ना वो करना है कि आप यू टेक हेल्प. इट्स अ होल प्रोसेस दैट एंगेज यू, दैट हेल्प यू, और डेफिनेटली आपका कथार्सिस भी होता है. आप बात करते हो एक इंसान के साथ, शेयर करते हो, एंड एज अ थेरेपिस्ट आपका जो जो मेरा रोल होगा या जो एज अ थेरेपिस्ट जो रोल होता है वो ये होता है कि जो पर्सपेक्टिव या जो थॉट्स आपकी ऑल्टर हो चुकी होती है आप उनको हेल्प करने की कोशिश करते हो. देयर सीइंग, मे बी इफ अ पर्सन इज सीइंग वन साइड ऑफ द पिक्चर, एज अ थेरेपिस्ट यू शो देम द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल, कि यार इस चीज, इस सिनेरियो की या इस सिचुएशन की कोई और पिक्चर या कोई और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है. सो वी हेल्प देम ब्रॉडन देयर थिंकिंग, देयर पर्सपेक्टिव, दे चेंज देयर थिंकिंग पैटर्न्स, और बहुत सारी और चीजें जिसमें डेफिनेटली थेरेपी काम करती है. एंड थेरेपी हैज बीन प्लेइंग इट्स रोल इन द पेंडेमिक एज वेल. रीच आउट करने के लिए डेफिनेटली देयर ऑनलाइन थेरेपी एज वेल, जो कि आप बहुत इजीली इवन थ्रू शिफाम और जो है ना वो आप थेरेपी सेशंस को बुक कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं. बट वन थिंग दैट आई नीड टू रियली मेक पीपल अवेयर ऑफ, कि जब आप
अपने थेरेपिस्ट को चूज कर रहे हो या जब आप अपनी हेल्प के लिए रीच आउट कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू लुक अराउंड. दिस इज योर राइट टू लुक अराउंड फॉर अ गुड थेरेपिस्ट, जिनको आप जो है ना, आपको लगता है डेफिनेटली एक थेरेपिस्ट की कुछ बेसिक चीजें हैं जो वो आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा. फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, आपकी एम्पैथी है, ये सारी नॉन जजमेंटल आपकी तरफ हुए, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी व्हेन यू कम इनटू थेरेपी सेटअप. कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बहुत बिल्कुल पाकिस्तान जो है एज अ सोसाइटी, हम बहुत बातूनी सोसाइटी हैं. हम चाहते हैं कि हमें अपने अपने से पहले दूसरे की खबर पहले मिले. लेकिन कायनात, आई जस्ट वांट टू पॉज हियर एंड आई वांट टू जस्ट गो बैक 2 स्टेप, बिकॉज जहाँ पे हम बात कर रहे थे अबाउट स्टिग्मा एंड टैबू, हमारे मुल्क में इवन दो हेल्प, counseling, therapy is a new it's seeping in slowly, awareness आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है. लेकिन जिस चीज के बारे में हम बात करना भूल जाते हैं वो ये है कि थेरेपी किसके लिए अवेलेबल होती है. अगर हम अपने 80% मैसेज को ले लें या 90% मैसेज को ले लें, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एक बहुत बड़ी चीज है. Which is why अगर आप टेली हेल्थ on this platform or any other or via any telehealth network, आपके पास अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेज. मुफ्त काउंसलिंग के भी होते हैं, ट्रेनी काउंसलिंग के भी होते हैं, जो बहुत एक छोटी अमाउंट में सेशंस लेते हैं. ये हर किस ना समझें कि सिर्फ सीजन थेरेपिस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं या सीजन काउंसलर्स अवेलेबल हैं जो बहुत एक्सपेंसिव आपके लिए ये रूट होगा. नहीं, मुफ्त या फ्री ऑफ चार्ज सेशंस भी अवेलेबल होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट कॉर्पोरेट्स या डिफरेंट एनजीओज के थ्रू आपके लिए थेरेपी अवेलेबल होती है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज के अवेलेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं. आपको थोड़ा सा हिम्मत करके ये सहारा पकड़ना है. Please continue. You were talking about genuine, unconditional positive regard, respect, confidentiality. बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियलिटी इज डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब हमारे पास कोई आता है क्लाइंट, तो हम उनको यही बोलते हैं कि दिस इज द सेफ प्लेस एंड नथिंग इज गोइंग आउट. है तो जो मेरे और आपके दरमियान जो भी बातचीत है वो सिर्फ मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी, और वो जो है वो, और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का एट एनी पॉइंट जो है ना वो उसको ब्रेक करने का जो है ना वो हम सोच भी नहीं सकते. सो दैट is the ethical boundary that we have to follow. And और जो आपने बात करी वो डेफिनेटली बिल्कुल इम्पोर्टेंट है. Every and anybody can reach out for the therapy sessions. It is not necessary कि ये सिर्फ जो है वो socially strong या financially strong लोग ही इसकी तरफ जा सकते हैं या इसको वो कर सकते हैं. It is available for everybody, and trust me, they're highly amazing psychologists connected with the platforms of a lot of NGOs, and they're truly working only and only to bring awareness and only to actually help people everywhere. और मतलब हर तरह से लोगों की हेल्प करने की कोशिश की जा रही है. तो मतलब बिल्कुल फ्री में भी है और बिल्कुल मिनिमल अमाउंट में जो कि अगर आप पे कर सकते हैं तो उसमें भी है. एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आर हैपनिंग दीज डेज. तो एंड दैट इज ऑल्सो कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड किया जाएगा. उसके लिए भी इफ यू रियली वांट तो यू कैन ऑल्सो कम फॉर जो है वो इन पर्सन भी आपको मिनिमल कॉस्ट में जो है वो थेरेपी सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स, इन अ लॉट ऑफ एनजीओ के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं. तो the thing that I was talking about is also sorry, I'm just going to add on over here that on the Shifaam platform,
अगर आप रीच आउट करना चाह रहे हैं, देयर आर मोर देन 200 काउंसलर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड वैरायटीज। तो आप सिर्फ ऐप, फोन कॉल या वेबसाइट के जरिए आप अपने जो आपको प्रेफर्ड हैं थेरेपिस्ट या काउंसलर, आप उनके थ्रू आप सीख हेल्प कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड काइना। But so even on a lot of platforms, you have the description available of the therapist. It is your right to go through the description. It is the client, it is the person who's seeking help. It is his or her right to ask a few questions to the therapist. Please don't feel कि आप therapist से कोई सवाल नहीं कर सकते, या आप basically even in the initial sessions आप पूछ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। दिस इज योर राइट। आप उनसे उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी पूछ सकते हैं। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि वो इस फील्ड में कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं। आप उनकी डेफिनेटली आप कंसल्टेशन फीस वगैरह भी जान सकते हैं। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आया जो प्रॉब्लम्स या जो सिम्टम्स लेके वो आए हैं, उन्होंने ऐसे किसी सिम्टम्स के कभी पहले डील किया है या नहीं किया, या आपकी एक्सपर्टीज है उस बेसिकली उन सिम्टम्स को डील करने के लिए या नहीं है। सो ट्रस्ट मी, इट आई एम टेलिंग ऑल ऑफ द पीपल हु जॉइंड अस to make sure that you choose your psychologist, your counselor, because this is your right। और आप बिल्कुल सवाल भी कर सकते हैं, और फिर you decide that you really want to take help from that person, because obviously एक रैपो बिल्ड होती है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हो अपने जो है ना वो थेरेपिस्ट और क्लाइंट का एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, डेफिनेटली अ क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट रिलेशनशिप। बट विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि जो है वो आपको आपकी ग्रोथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो हेल्प कर सकते हैं। सो रीच आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, टू ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट is basically helping you, what is going to help you, what is triggering you, कि आपको क्या चीज इफेक्ट कर रही है। इसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए जो है वो देयर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जिनका जो है ना वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके बच्चे के साथ वो बच्चा एडजस्ट कर सकेगा उस थेरेपिस्ट के साथ। बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी में जिनका बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होती है, आप उनके पास अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल रावी, अगर हमारे पास बच्चों के सेशंस के लिए पेरेंट्स आते हैं ना, तो इट इज आवर फर्स्ट वो कि हम पेरेंट्स के साथ पहला सेशन या एक आधा सेशन पेरेंट्स के साथ भी लेते हैं, बिकॉज वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। और ट्रस्ट मी, जब पेरेंट्स साथ आते हैं ना तो बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड, बहुत सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, बहुत सारी चीजें समझ आने लग जाती है कि एक्चुअली है क्या, किसकी डोमिनेंसी है घर में, किस तरीके से देयर गोना। और ये समझना जरूरी है कि बच्चे के लिए क्या वो सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर भी रीच आउट टू द टीचर्स। और देखें पेंडेमिक में यही था कि वी कुडंट डू दैट, हम भी फंस गए थे, बिकॉज वी डिड नॉट नो कि हम किस तरीके से। फिर ये होता है नेक्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली द टीचर्स, द स्कूल्स, उनको हम रीच आउट करते हैं टू सी कि हम किसी भी तरीके से बच्चे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकें, जिसमें वो सेफ फील करे, वो निकल सके, वो अपनी चीजों को शेयर कर सके, एंड ही और शी अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज एंड हाउ दे वांट टू डेफिनेटली परस्यू विद देयर एजुकेशन, हर चीज को लेकर। एंड कायनात, इधर एक और चीज जो जो I do believe कि जो हम दोनों का we were on the same frequency about talking about the child। एक बच्चे के नज़रिए से, एक बच्चे के पर्सपेक्टिव पे हम लोग क्यों बात कर रहे थे इतनी फॉर द एडल्ट्स, फॉर द केयर गिवर्स, बिकॉज कोविड-19 में बहुत सारे जो प्राइमरी केयर गिवर्स थे, जो पेरेंट्स थे, वन ऑफ द पेरेंट्स, बोथ ऑफ द पेरेंट्स कोविड में मुब्तला होके वो चल बसे। सो अनदर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त जो भी स्कूल टीचर्स सुन रही हूँ, जो भी एडवोकेट सुन रहे हो, वो ये याद रखें कि पेरेंट्स के साथ साथ एडल्ट्स और केयर गिवर्स का एक जो अल्फाज है या गार्डियन का अल्फाज जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एज चिल्ड्रन टुमारो इट मार्क्स, पूरे 1.5 साल बाद बच्चे फुल फोर्स में कल से स्कूल जाएंगे।
इट इज अ ह्यूज थिंग। एंड जब वो कल स्कूल जाएंगे तो उनको ये वापस महसूस होगा कि वो वापस अपने सेफ स्पेसेस में आ रहे हैं, वो वापस अपनी नॉर्मल, थोड़ी बहुत नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ, लाइफ रूटीन की तरफ रिज्यूम कर रहे हैं। तो उनको एंड ये, जी बिल्कुल, बोलिए। आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब हम ये टर्म यूज करते हैं ना पेरेंट्स का, तो ये डेफिनेटली हमारे टॉपिक और उससे बहुत ज्यादा वो है, बट क्योंकि हमारी इस बारे में बात हो रही है तो आई वुड वांट दिस थिंग टू शेड सम लाइट ओवर दिस थिंग कि जब हम पेरेंट का टर्म यूज करते हैं, पेरेंट इज लाइक एन अम्ब्रेला टर्म। उसमें सिर्फ माँ बाप पेरेंट्स नहीं होते। पेरेंट का जब टर्म यूज किया जाता है तो पेरेंट में हर हर वो इंसान आ जाता है जो उस बच्चे से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे वो फैमिली का कोई और हो, इवन द हेल्पर्स जो आपके घर में होते हैं या जो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, वो भी उस टर्म के अंदर आ जाते हैं। तो जब हम ये टर्म यूज करते हैं कि पेरेंट्स, और जब हम ये बोलते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट ओनली द मदर और द फादर, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर वो सारे लोग आते हैं जो बच्चे की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरह। तो जब हम ये बात करते हैं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग की या बच्चों की जो है ना, वो डेफिनेटली इस उसमें पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि कैसे हम लोग जो है ना वो बच्चों को पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ या उनके जो बेसिकली उनको पनिशमेंट ना दें, उनको ये नहीं करें, मारे हमें बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है ना, हम आप लोग ये बोलते हैं कि मारे नहीं बच्चों को, डांटे नहीं, ये नहीं करें, वो नहीं करें, बच्चों पे ट्रॉमा हो जाता है, ये हो जाता है, तो फिर हम करें क्या? मतलब वी नीड टू डेफिनेटली पुट अ बाउंड्री, बच्चों को संभालना तो है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप गुस्सा नहीं करें या आप वो नहीं करें। इट्स नॉट दैट कि आप ये नहीं करेंगे, आप करेंगे, but there are other ways as well. It's not only about giving punishment, it's about reinforcing as well. आप कभी कभी बच्चों को reinforce करके भी किसी बिहेवियर, reinforce अगर मैं समझाऊं, जो पब्लिक अगर कोई पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं और उनको हो के reinforce क्या है कि अगर आप किसी चीज को बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने अगर टाइम पे होमवर्क किया है, आप उसको एक एक्स्ट्रा टाइम जो है वो खेलने का बाहर दे दें। फॉर एग्जाम्पल उसने टाइम पे होमवर्क खत्म कर लिया, तो आप उसको बोले ओके यू टेक 10 minutes मोर टू प्ले आउट, 10 minutes more of cycling, 10 minutes more of, या फिर you won't have to do the dishes, या आपको कोई ऐसी चीज जो बच्चा जिससे खुश हो, उसको पता हो कि यार अच्छा मैं ये करूंगा तो मुझे ये पॉजिटिव चीज साथ मिल सकती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पनिशमेंट। इस तरीके से, और डेफिनेटली आप डांटते भी हैं बच्चे को, बट कम्युनिकेशन जब स्ट्रॉन्ग होती है पेरेंट्स, एंड दैट covers all of the caretakers and the guardians and the grandparents, communication is the Kainath, I think I just lost you. And I can see how delicately Kainath was going एक बहुत ही important part पे with this. So we're just going to hope that she joins us back soon. बहुत स्ट्रॉन्ग है बच्चे के साथ। तो कायनात, आपको मेरी आवाज आ रही है? We had lost you for just that bit जब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रही थी, एंड आप ने ये सम अप किया था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। बिल्कुल, और कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड। तो वो इवन अगर आप उसको गुस्सा भी करेंगे तो उसको समझ आएगा कि अच्छा यार ये सिचुएशन है, मे बी दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, मे बी दिस इज समथिंग, सो यू नीड टू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड। अगर हम ये बोलें कि हम बच्चे को कम्युनिकेट ना करें, नहीं, आजकल द टाइम हैज चेंज्ड, यू रियली नीड टू कम्युनिकेट विद योर children in order to make them understand what situation they're going through as a family. Allah na kare, for example, pandemic या COVID की वजह से the family is going through something or the other, maybe. तो उन सारे हालात के बारे में बच्चे को अगर आप कम्युनिकेट कर देंगे, ट्रस्ट मी, चिल्ड्रन आर सो स्मार्ट दीज डेज, दे आर सो स्मार्ट, वो आपको हेल्प करेंगे, दे आर गोना बी देयर विद यू एंड दे आर गोना हेल्प यू। वो कहते हैं ना कि कभी घर में बच्चा होता है, आप जितने भी टेंशन में, वो आपको हंसा देगा, वो आपको आपका माइंड चेंज कर देगा।
anyhow with their act, their thing, and they're gonna be, and you're gonna be like, "Hey, yeah, it makes a difference when you communicate with children." Yeah. And I think we will need another session for this because इस पे जितनी बात करें उतनी कम है कायनात, because as coming from a therapeutic space, I know and I understand कि इसको जितनी देर भी बात करते जाएं कम पड़ती है. So a little bit of a closing for this session, कायनात. As a psychologist and as people जो इस वक्त आपकी बात सुन रहे हैं, what is the one thing that they should look out for when selecting a therapist for themselves? Since technological issues keep playing with us, हम wait करेंगे कि कायनात rejoins us. I think she is frozen. Kainat, you are frozen. I hope you can hear me. Yeah, I can hear you. So wrapping up the session, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि as a psychologist, जब लोग reach out करें, whether for their अपने बच्चों के लिए, whether for themselves, one main thing that they should be looking out for, so that we can close the session. Yeah. So definitely when you reach out, you can, all of these platforms have, all of these NGOs have made it very, very easy to approach the psychologist. So आप अपने लिए जो है वो, you look out, because it's definitely gonna, you need to trust the therapeutic process, and you're gonna see a difference in your life that is gonna take place, because obviously some sort of professional help at any point will definitely help you grow, will definitely help you understand your own personality. And a lot of platforms are available. Through them you can definitely look for the best psychologist that you think you can approach, and आप उनके साथ therapy sessions book कर सकते हैं. They're available in person as well as online. Most of the therapists are there, and if anybody who wants to book a session with me, there they can definitely reach out. And as you told earlier, I do my in-person sessions at House of Pebbles, and through there, that is platform or Shifaam ki platform ke through, you can definitely reach out. So yeah. And so Kainat Amin is available on Shifaam through House of Pebbles. अगर आप इनके साथ अपनी अपॉइंटमेंट, कंसल्ट अपॉइंटमेंट और या अपने सेशंस बुक करना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट कॉल Shifaam, यू कैन डू इट थ्रू द ऐप, या फिर आप कॉल इन करके या वेबसाइट के ज़रिए आप इनके साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच कायनात. ये एक बहुत वंडरफुल सेशन था, बहुत सेंसिटिवली टैकल्ड सेशन था, एंड आई होप everybody who was listening was able to take something back, and we need another session to be able to do part 2 of this. So thank you so much, and everybody have a great Sunday. Khuda Hafiz.